In the question number 17, you want to find out the monthly sales amount. That means the first column will be for the month and second column will be for the sales. What's the doubt in this? You are getting the month from the order date column and obviously want the total sales of the January, then February, then March, and obviously the aggregated function will be the sum function. Since it's in the select statement, you are using two columns. Which column is aggregated? Yes. Months is not aggregated. Yes. जरूरी नहीं है कि हर पिंक कलर का फंक्शन एग्रीगेट फंक्शन होगा. Okay, only sales is getting aggregated. Aggregated functions are what? Sum, count, max, min, average. Okay, whereas order date is not aggregated. It's a date function. Okay, so when we have the combination of aggregated and non-aggregated functions, so obviously we are going to use group by. Who will go in the group by? Non-aggregated column. And which is a non-aggregated column? Month. Yuvika, question number 17 is clear? Yes. In the question number 18, you wanted to find out, do we have any customers which have duplicate reference number? When a record is getting duplicated, it means its occurrence will be more than one. How will you find its occurrence more than one? The number of times it is getting repeated, and number of times getting repeated means count function. Okay. So what we have done is, in the first column, I am displaying all the reference numbers. In the second column, I am finding out how many times each reference number is getting repeated. Okay. So when I work only with this much part of the code, you can see all the reference numbers are coming up and then all the number of times which they have been repeated. Now, what is the question asking? How many customers with duplicate reference number? That means you are interested in those reference numbers whose count is more than one. Filter will be applicable on which column? First or second? Second. Second is aggregated column or non-aggregated column? Aggregated. So which filter? Having. Okay. Another thing is, here we are in the select statement, so we are working with a single column. तो इसको group by में क्यों डाला है? चाहे column same है, but एक बार वो aggregation की तरह use हो रहा है और एक बार non-aggregated. Okay, so it has to go in the group by. Non-aggregated column चाहे same हो, चाहे अलग हो, वो हमेशा group by में जाएगा अगर non-aggregated है तो. ठीक है? Yuvika, is this question clear now? Yes. Okay. Any other doubts, guys? Yes. Any other doubt? Okay. Then let's start with the next topic. We'll discuss about the functions today again. Okay. The first category of functions, aggregated functions, we have already covered yesterday. Equation करा था हम लोगों ने max min वाला. ठीक है? We have already done that. Now let's talk about text functions. Okay, so we have a table. Select everything from TBL order, the same table with which we worked yesterday. This was the table. Now you can see the reference number here. Reference number is a combination of multiple things. We have country code, we have year, we have order ID. I want to separate out these three things. Okay, country code you will fetch with the help of which function? Left. Okay. Order ID you will fetch with the help of right. And the year part, we don't have mid and sequel. What do we have? Substring. Okay. So let's see how we can do that. So what I'm doing is, instead of displaying every column, let's display only reference number. This is the actual reference number. Now let's start dividing it into three columns. Split columns option. First of all, left. The parameters of the left function in SQL will be same as that of Excel. कोई फर्क नहीं है. Okay. Now you want to apply left on which column? Reference number, right? That is what the first parameter is. Expression, and data type is n_varchar. Okay. What does this n_varchar1 means? 1 का क्या मतलब हुआ? By default अगर आप left लगाओगे तो एक ही character लेगा, because second parameter is optional. ठीक है? So anyway, we are applying it on the reference number. What's the second parameter? Number of characters. अब आपको left से कितने characters चाहिए to get the country code? 2. That's it. Same thing we were doing in Excel also, right? As let's say country code.
Okay. Second column that we are going to create is from the right. Right of reference number. How many characters do I want from the right hand side to get the order ID? 6. Okay. So it will be 6 as order ID. Now, next function that I want to apply is the substring to get the year part. So substring. Okay, you want to apply this substring. Mid function का पहला parameter क्या होता था? In Excel, what was the parameter of mid function? First of all, where you want to apply? Second, start number. What do you think is the starting number over here? 4. It's 4. How many digits you want from the fourth position? 4. As years. Done. We are getting the country code, order ID, and the years. Okay. Any doubts in this question? All right. Next is select from TVL order. Now, instead of displaying every column from the order table, I want to only display customer name. I want to separate out the first name and the last name. Find out the first and the last name. Okay. For the first name, which function we are going to use? Left. Left of customer name. Now, how many characters do you want from the left hand side? Can I use a static value? No. Every time it will change. What we were doing in Excel? What we were finding? Space, right? Same way you're going to do in SQL, but the difference is in Excel we have find, in SQL we don't have find. We have something called char index. Task is same, parameters, acceptance, everything is same, only function name is different. Find of Excel is char index in SQL. Okay, so we are going to use char index. Look at the number of parameters. Now, you want to apply this character index, this find function where? Customer name, what you are finding for? Basically, wait. Okay. We are looking for cust name. In the cust name, what we are looking for cust name? Space. In SQL, text is represented by single quotes. In Excel, it is represented by double quotes. Okay. From where you want to start your search? Obviously from the first letter. So I don't have to provide the position, which is the third parameter, and that is optional. Okay. Close your char index function. Okay. Do I need to do +1 -1 something? What? -1. Why? It will give space after every first name otherwise. Okay. So it will be -1. I don't think anyone should have a confusion here. ये Excel में हमने बहुत time लगा के discuss करा है. Okay. As first name. All right. What about the last name now? Right of customer name. How many characters do you want from the right hand side? It will not be again a static value. अब कैसे निकालोगे? पूरे स्ट्रिंग की लेंथ लोगे, उसका क्या करोगे फिर? स्पेस की लेंथ नहीं, स्पेस की पोजीशन. ठीक है, लॉजिक इज करेक्ट. यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ एंटायर टेक्स्ट. रिक हैंसन की पूरी लेंथ कितनी है इंक्लूडिंग स्पेस? 11. स्पेस की क्या पोजीशन आ रही है? 11 - 5 कितना हुआ? हैंसन के कैरेक्टर्स कितने हैं? ओके, सो length function is same as that of
Excel. Okay. Length of customer name minus find function of Excel is char index over here, character index on the customer name, looking for space and closing the right as last name. What happened? Invalid length parameter passed to the length. What happened here? 1 minute. Right of customer name, my length of customer name. Wait. Select first name from comma char index first name space. It's giving 0. Why 0? वो नहीं करे हम लोग तो सिंपल यहाँ पे तो वो निकाल रहे हैं ना पोजीशन ऑफ स्पेस. It will be space at the front. First name. Done. Rick and then the last name. Okay. Now tell me one more thing. When we are talking about the last name, do we have to do something for the space also? Plus minus कुछ करना है क्या? Think about this. For the last name, length of complete Rick Hansen is 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, 11 minus what's the position of the space? 5. Okay, so it will return 6. Now, do we need to include space over here somewhere? Plus minus kuch karna hai kya? No need. Okay. All right. Next thing is find the position of first and second hyphen in reference number. So select reference number from order table. This is the table. You want to find out what is the position of the first hyphen and what is the position of second hyphen. So in order to find the positions, which function? Char index. Okay, what do you want to find? Hyphen. Where do you want to find? Sorry. Reference number. This will be called first hyphen, let's say. Let's execute. Is it correct? Yes. Okay. Everywhere it's 3333, which is fine. I want to find out the occurrence or the position of the second hyphen now. What will be the logic? First of all, tell me the logic. How we used to do in Excel? Find के अंदर find लगाते थे? Same way, char index within char index. Okay.
So it will be char index looking for hyphen within the reference number. The third parameter is from where you want to start your search. By default, it start from 1. That means the first letter. अब आपकी search कहाँ से start होगी? That means 4. 3 plus 1. अगर 3 से करोगे तो वो पहली occurrence ही दे देगा. ठीक है? तो how did you get this 3? Using that above function. तो same यहाँ पे लिखोगे आप. Char index. Finding the hyphen. Sorry, only hyphen, not space. Within the reference number plus 1. Hyphen 2. Is the output correct? Yes. Okay. So there is no difference in logic. Okay. Next question. Replace the hyphen in reference number with underscore. This is the query. You want to replace all the hyphens with underscore. If I had to do this task in Excel, what would have been the function? That is for the utility you are using. Function will be what? Substitute. Okay. We don't have substitute in SQL. We have replace for that. Okay. So we are going to use replace. Now this replace you want to apply where? Reference number. What do you want to replace? Hyphen. With what you want to replace? Underscore. That is your parameter. These are the parameters. 3 parameters. Where you want to apply, what you want to change, with what you want to change. Okay. As I can call it as new reference number. So tell me one thing, is it going to replace the first occurrence or all the occurrences? All the occurrences wherever hyphen is coming up. Is it working? Yes. Okay. फाइन लगाना पड़ेगा. इसकी जगह पे क्या लिख दोगे? ये कैर इंडेक्स वाला फंक्शन. ठीक है. कैर इंडेक्स केस सेंसिटिव केस क्या कैर इंडेक्स नहीं, कैर इंडेक्स आप ये नहीं बोल सकते केस सेंसिटिव है. सीक्वल इज केस इनसेंसिटिव. इसमें सब कुछ एक ही तरह से ट्रीट होगा. अगर आपको एक्सप्लिसिटली चेंज करना है कैपिटल को ही, आप अगर आप मान लो आपके पास एक वर्ड है www, फर्स्ट w इज इन कैपिटल, अदर w इज इन स्मॉल, आपको पहले w को ही चेंज करना है, बाकी को नहीं करना. फिर आपको लेफ्ट लगाना पड़ेगा. आपको पहले वो कैरेक्टर निकालना पड़ेगा, टेक्स्ट फंक्शन लेफ्ट राइट मिडल करके करोगे, उसके बाद रिप्लेस लगाओ. तो वो जो लेफ्ट वाला फंक्शन है ना, वो इस जगह आएगा. ठीक है. Okay, next question is hide the order ID from reference number with this. Select from TBL order. And we have reference number basically. You want to hide the order IDs now. If same thing you have to do in Excel, how will you do it? Basically substitute. Okay. In SQL, we have another function which is known as stuff. You want to stuff something. Okay. Where you want to apply the stuff function? Reference number. Now, starting from which position? After second hyphen. तो position बताओ क्या आ रही है? Calculate. Order ID is towards the last 6 digits. 9. Starting from 9. 9 से कितने characters? 6. किसके साथ replace करना है?
4 parameter stuff except. Where you want to apply? Starting from where? Number of characters with what you want to replace. Okay. Now tell me one thing. These are 6 characters. Stuff के लिए जरूरी नहीं है कि 6 के 6 कैरेक्टर्स ही आपको चेंज करने हैं. अगर एक्चुअल में 6 है, आप उसकी जगह पे मैक्सिमम लेंथ भी दे सकते हो. दिस इज व्हाट जनरली बैंकिंग फॉलोज, फाइनेंस. जब आपको बैंक की तरफ से कोई मैसेज आता है, कभी भी आपका फोन नंबर पूरा नहीं होता, या आधार कार्ड नंबर पूरा नहीं होगा, या बैंक अकाउंट नंबर पूरा नहीं होगा. लास्ट के या फर्स्ट के 4 डिजिट्स होंगे. और अगर किसी ने एक्स काउंट करे हैं, वो एक्जैक्टली सेम नहीं होते आपके बैंक अकाउंट नंबर की लेंथ के. दे आर ऑलवेज मोर देन और लेस देन दैट. एंड व्हाई? कोई रीजन बता सकते हैं क्यों ऐसा क्यों है? हाँ, कि अगर मान लो हैकिंग के चांसेस है, अगर हैक हो रहा है, तो हैकर के लिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. उसको पता है कि ब्लैंक्स 10 है और आपने एक्स दे दिए 12-13, तो कितनी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस लगाएगा वो. ठीक है. सो दिस इज बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजंस. ओके. ऑलराइट. एज न्यू रेफरेंस नंबर. डन. मैम एक बार फिर से बता दो स्टफ वाला. Stuff function accepts 4 parameters. First parameter is you want to apply stuff on which column. Second is it should start from which position. We are starting from this 1 2 4 8 9 1. 1 से start करना है, position number 9. यहां से कितने characters को stuff करना है? 6. And किसके साथ stuff करना है? That is your 4th parameter. Okay, ma'am. So these are your text functions. Any doubts here? Okay. The next category of function is date functions. Again. Okay. Yesterday we have already seen date def. What is the use of date def? Difference between two dates. इसका कोई practical use case बताओ date def का. Calculating the age of a person. What else? If the DOJ is known to you and current date is known to you, you can find the number of years a person has joined the company. Anything else? हाँ. The next function that we are talking about is date add. Okay. We have order date from order table. Now, in each of these dates, you want to add 5 months. So after adding 5 months, this date will become what? After adding 5 months into this first date, new date will be 31st December. This will be 15 हो जाएगा. Year also will change. It will become 2015. आपने 15 बोला, 2015 कहाँ बोला? Okay, so if you want to add any static value to the dates, we have something called date add. Okay. Now, which interval you want to add? Month. How many months you want to add? How many months you want to take it into the future? Let's say 5. Okay. अब ये सारी चीजें लगाओगे किसके ऊपर? Order date. As let's call it as future date. Look at the output. This became 31st December. This became 14th of March 2015. Okay. So this is how you can add the date intervals. Okay. Second, I want to go into the past date. आपको 6 months पीछे जाना है. So which function? Date add. Date diff होता है 2 dates का difference. Okay. Date add. Interval will be month. अब आपको back जाना है तो it will be minus. Okay. And then order date as past date. Look at this. This was 31st July. I am going 6 months back. I am into the month of January. Any use case of date add? Okay, what else? Shipment date.
like 5 days or 6 days. हाँ, if the company's policy is after placing the order, मतलब कि 3 तरह के कस्टमर हैं, प्लैटिनम, गोल्ड और सिल्वर. जो सिल्वर वाले हैं उनको हम बोल रहे हैं कि 2 दिन के बाद शिपमेंट होगा. ओके, तो इफ आई सेज दैट आफ्टर 2 days योर प्रोडक्ट विल बी शिफ्ट, तो अगर किसी ने आज अपना ऑर्डर प्लेस करा है तो 2 दिन के बाद क्या डेट आएगी, उस केस में डेट एड यूज हो जाएगा. ओके, व्हाट एल्स, एनी अदर एग्जांपल? बैंक्स के अलावा बताओ. और कुछ सब्सक्रिप्शंस कैसे? Simplest example is every one of us goes to the grocery store, right? क्या हर प्रोडक्ट पे एक्सपायरी डेट लिखा होता है? हर प्रोडक्ट पे होता है? जनरली कुछ पे मेडिसिन पे लिखा होता है, खास करके विच आर क्रिटिकल प्रोडक्ट्स, क्रिटिकल आइटम्स जो होती हैं, फॉर एग्जांपल योर डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है, योर मेडिसिन, ऑल दीज विल हैव अ डेफिनेट एक्सपायरी डेट. अगर आपने कभी दूध का पैकेट खरीदा उसके ऊपर लिखा होता है यूज बिफोर दिस डेट, ठीक है. बट अगर आप ब्रेड देखोगे, ब्रेड के ऊपर क्या लिखा होता है? बेस्ट बिफोर लिखा होता है. या अगर आप टूथपेस्ट के ऊपर भी देखोगे उसके ऊपर भी लिखा होता है बेस्ट बिफोर 12 months ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डेट, ठीक है. तो मान लो मैन्युफैक्चरिंग डेट आज की है और वो 12 महीने के बाद एक्सपायर होगा, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि डेट क्या आएगी. ओके, तो एक्सपायरी डेट कैलकुलेट करने में डेट एड विल बी यूज्ड, ठीक है. दिसंबर है और मैं उन्हें यूज कर ले रहा हूं, तो मैं आज इतना ये दिखाया दिस इज 14th October. I added 5 months. Any doubts in date add? Just for the simplicity and the clarifications, let's do date diff also side by side. Okay, we have select order date from TVL order. You want to find out how old these orders are. It's from the year 2012. Current year is 2023. तो कितने साल पुराना ऑर्डर का डिटेल है वो यहाँ पे डिस्प्ले कराना है आपको. तो we have date diff. You want to find the difference with respect to which interval? Month, year, days. This thing we have seen yesterday also. Okay, let's go with year. Okay, now what will be the starting date? Current date, order date. Starting date will never be greater than the end date. ये Power BI में भी पढ़ा था. Okay, what will be the end date? Today's date, and today's date will be what? Get date. As order age. Done. Okay, yesterday we have seen that with the date def, this interval can be anything. Same way date add के अंदर this interval can be anything. Okay, any doubts in date add or date def? Online guys, any doubt? वो कास्ट कन्वर्ट से करोगे वो भी करेंगे, आप डायरेक्टली उसको नहीं यूज कर पाओ, वो वरना टेक्स्ट कंसीडर होगा. ठीक है, ऑलराइट. If everything is clear, we are going to start with the next topic, which is the data type conversion functions. Very important. Months. Year पे इफेक्ट नहीं आएगा, उसका सिर्फ months में इफेक्ट आएगा. There are two types of data conversion functions. One is known as cast. Second is known as convert. Okay. Syntax. Cast is a keyword. Okay. Column name with which you want to work as keyword. Then you will mention new data type. Okay. For example, if I take up a question,
change the data type of sales to whole number. Okay, so what will be the answer? Obviously, we are going to use cast. Okay, now look at the syntax. Which column you want to change? Sales. As. What will be the new data type? Whole number data type hota hai. Integer. That's it. Clear to everyone? Again, will the changes be permanent? No. Okay. Then we have convert. Syntax. Again, convert is a keyword, or you can say convert is a function name. It accepts parameters as new data type, comma, the column on which you want to work, and the third parameter is optional, which is known as in format. Okay. Part A. If the first two parameters are used from convert, it will act same as that of cast. This line is clear to everyone? अगर आप कन्वर्ट के पहले दो पैरामीटर्स को यूज करोगे, यानी कि मैंडेटरी पैरामीटर्स को यूज करोगे, इट विल एक्ट सेम एज दैट ऑफ कास्ट. फर्क सिर्फ इतना है, न्यू डेटा टाइप ऑफ कास्ट विल कम एट द फ्रंट, column name will go at the back, as will be replaced by comma. Okay. Second point, the optional parameter is used while working with dates. Okay, so let's see what we can do here. Everyone done with the writing? Okay, let's close this thing. Okay, question number 1. Change the data type of sales so that it shows only 2 decimal values. Okay, so we have select from TBL order, and what was the column name? Do we have sales? Let's go with everything first. Yeah, we have sales. Okay, how can you check the data types of these columns? You can go to the databases, go to your required database, go to the tables. Under the table, select your table, expand it again. Under the columns, you will see all the data types. Okay. Now, if you look into this, what is the data type of sales? And this we discussed in the first or second class also. Numeric means what? It can either be a whole number or a decimal value. If it is a whole number, maximum length will be 18 digits. But if it is a decimal value, the whole number maximum part 18 का हो सकता है और maximum decimal कितने fixed होंगे? 5. Okay. I want to change the data type of sales from numeric to what? अगर हम लोग ये बोलें कि मेरे को ये सारा डेटा 2 decimal place तक चाहिए. As of now, it's showing 5 decimal places. In order to convert the sales into 2 decimal number, what do we have for the function? Round. Okay, let's apply round function and let's see what happens. I want you guys to look at this value, third value. The decimal part is what? 0.64400. जब मैं इसको 2 decimal place में round off करूंगी तो point के बाद क्या आना चाहिए? That's it. Okay, let's see what happens. Comma. Round is which category of function? Number functions. What were the other number functions? Ceiling, floor, round, absolute, one more. Exponential. Okay. So, you want to round off sales. कितना round off करना है? 2. Question.
Look at the value. What do we get? वो 0.64 तो हो गया, बट उसके बाद क्या आ रहा है? ये क्यों हुआ? न्यूमेरिक डेटा टाइप. और न्यूमेरिक के लिए हम लोगों ने क्या फिक्स करा था कि डेसिमल हमेशा 5 वैल्यू तक आएंगे. ओके, ये 0.64 तो बन गया, ये 4 किसमें कन्वर्ट हो गया? 0. ओके, बट व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग, and this thing is only going to be done with the help of data type conversion. यानी कि न्यूमेरिक से इसको किसमें चेंज करोगे? फ्लोट. एंड फ्लोट एक्ट एज फिक्स्ड लेंथ. मतलब कि जितने डिजिट होंगे सिर्फ उतना ही दिखाएगा, एक्स्ट्रा जीरोस नहीं दिखाएगा वो. ओके, ऑलराइट. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन, select actual sales from TBL order, comma, आई एम जस्ट कीपिंग द सेल्स एज अ रेफरेंस की ओरिजिनल सेल्स क्या है और कन्वर्जन के बाद क्या है. ठीक है. In order to convert any value, we have simple cast function. So let's use it. Cast. What do you want to change? Sales. As new data type will be float. Let's call it as new sales. Look at the output now. What happened? जो एक्स्ट्रा जीरो थे वो निकल गए, जो मेरे नंबर का पार्ट ही नहीं थे. आप इस वैल्यू को देखो, इट वॉज 0.644. 0 क्यों आया? क्योंकि फिक्स लेंथ थी. अब मैंने फिक्स लेंथ नहीं करी है तो 0 इज गॉन. बट आई कैन स्टिल सी दैट समवेयर इट्स 3 डेसिमल, समवेयर इट्स 2, समवेयर कहीं 4 भी होगा. अब मेरे को इस चीज को किसमें कन्वर्ट करना है? 2 डेसिमल. तो इसके बाहर राउंड लगा सकते हो. अब आपको राउंड किस पे लगाना था? सेल्स के ऊपर. बट आप एक्चुअल सेल्स कंसीडर नहीं कर रहे हो, अब आप कन्वर्टेड सेल्स कंसीडर कर रहे हो. दैट इज अ फर्स्ट पैरामीटर. कितने नंबर ऑफ डिजिट्स तक इसको राउंड ऑफ करना है? 2. Look at the answer. Okay, so try to understand what is happening in the above code. What was happening over here? We were converting the actual sales, but वो numeric में था तो zero change नहीं हो रहे थे, zero वहीं पे थे. So in order to take out the, in order to exclude those extra zeros, first thing is you have to convert your sales as float. अब उसके ऊपर आप क्या लगा रहे हो? Round function. Clear to everyone? This is what task is. Now same task I want to do with the help of convert. Let's call it as new sales 1. अब सेम टास्क आपको कन्वर्ट के साथ करना है. कन्वर्ट. व्हाट यू वांट टू कन्वर्ट? व्हाट्स द पैरामीटर्स ऑफ कन्वर्ट? न्यू डेटा टाइप. न्यू डेटा टाइप, कॉलम नेम. इन फॉर्मेट कब यूज होगा? जब डेट्स के साथ काम करो, वरना नहीं यूज होगा. ठीक है. तो व्हाट विल बी द न्यू डेटा टाइप? फ्लोट, कॉमा, ऑन विच यू आर अप्लाइंग इट? सेल्स. दैट्स इट. एज न्यू सेल्स 2. अब इसको आप राउंड कर सकते हो up to 2 decimal place. What happened? Oh, comma. You will get the same answer in both of them. Okay. तो इस केस में चाहे कास्ट लगाओ, कन्वर्ट लगाओ, आंसर विल बी सेम. एक्चुअल यूटिलिटी ऑफ कन्वर्ट इज विद द इन फॉर्मेट व्हाइल वर्किंग विद द डेट्स. Any doubts in this question? So what we have done basically, first convert the sales into float so that unnecessary zeros can be removed. Secondly, or we can say then round off the numbers up to required decimal places. This is what we have done. Any doubts online and offline, guys? Okay, let's work with dates then. Working with dates.
select, I select the date as maybe, what can I select? Okay. 05/08/2023 as date 1. Okay. Now tell me one thing. How will you read this date? ये तो ठीक है. But how will you read this date? Is it 5th of August? It can be 8th of May also. आपको नहीं पता. ठीक है. Now, what's the data type of this? It's not date, it's text. आपने कोड्स में खुद लिखा है ये. अगर डेट को बनाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक यूज ऑफ डेट फंक्शन. ठीक है. अब इस चीज को डेट में कन्वर्ट करना है. मान लो इसमें मेरे को अब 5 मंथ्स ऐड करना है. लेट्स से द डेट इज 5th of October, नॉट अक्टूबर, अगस्त. ओके. इसमें 5 मंथ अब ऐड करोगे तो क्या नया डेट बनेगा? जनवरी में आएगा. ओके. तो इन ऑर्डर टू ऐड 5 मंथ्स इनटू द डेट, अभी हमने एक फंक्शन पढ़ा था, कौन सा था? डेट ऐड. लेट्स अप्लाई डेट ऐड. क्या ऐड करना है? मंथ. कितने मंथ्स ऐड करने हैं? 5. किसमें ऐड करने हैं? दिस गिवन डेट. कैन आई यूज एन एलियस नेम? नो. आपको डेट दोबारा देनी पड़ेगी. 05/08/2023 as date 2. What happened? वो ठीक है. डेट क्या आई है? मैंने तो DMY फॉर्मेट करा था. सिस्टम ने क्या रीड करा उसको? MDY. तो ये चीज कंट्रोल करने के लिए आपके पास क्या है? इन फॉर्मेट फ्रॉम दी कन्वर्ट टू स्पेसिफाई विच इज अ मंथ पार्ट, विच इज द डे पार्ट. ओके. अदरवाइज सिस्टम बाय डिफॉल्ट क्या करेगा? वो हमेशा पहले 2 डिजिट्स को मंथ नंबर कंसीडर करेगा. पावर बीआई की सेकंड केस स्टडी में भी यही हो रहा था. ठीक है. Okay. So this is not going to work. If I use cast, what was the syntax of cast? Cast column name as. Okay. So यहाँ पे column name क्या है? The value. Date 1 तो use नहीं कर सकते हो. Alias is not allowed apart from order by. As what? Date. What it is reading? 8th of May. First part is treated as month, second part is treated as date. Okay. But I want to display it as 5th of August only. Okay. So यहाँ पे comment बना देते हैं wrong. Okay. So we are going to use convert. Cast will never be used with the dates. Never. Okay. What were the parameters of convert? पहला parameter क्या था? New data type, date. किसको convert करना है? The given date. यहाँ पे column name हमारे पास नहीं है तो I have to enter the date myself. Then अगर मैं यहाँ पे बंद कर दूंगी तो cast की तरह काम करेगा. ठीक है. तो I have to use the third parameter which is in format, and what in format is basically, let me show you. You can find it on Google and multiple websites have that. Also, first of all, tell me what is our pattern? DD, MM, YYY separated by hyphens. Okay. Look onto this side. कहाँ पे format मिल रहा है आपको? This is MDY with slash. Okay. Let's keep on scrolling. Is this the required format? No, it's year without century. I want DD, MM, YYY with these hyphens in between. कहाँ पे? वो तो slashes है.
एक सेकेंड, यहाँ पे है कहीं पे, वेट करो. What's 105? Basically the most used type is this one, 105. Okay, look at the output. Let's see what happens. If I use the in format as 105, let's see whether it gives us the correct dates or not. Date 2 तो गलत है क्योंकि वो रीड कर रहा है 8 में. क्या डेट 3 ठीक है? गलत है? सही तो है. क्या गलत है इसमें? It is 5th of August 2023. What is this date? 5th of August only. But इसको आप अगर बोलो कि हमें DMY में ही प्रिंट कराना है तो फिर आपको फॉर्मेट फंक्शन यूज करना पड़ेगा. रिमेंबर कल फॉर्मेट यूज करा था, ठीक है? बट सिस्टम हमेशा उसको डिस्प्ले करेगा, स्टोर करेगा इन द फॉर्मेट ऑफ YMD एवरी टाइम. ठीक है. अब ये करेक्ट डेट कैसे आया डेट 3 से? क्योंकि आपने सिस्टम को ये बताया है कि ये इनपुट कैसे है. ठीक है. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द टर्म फॉर्मेट? फॉर्मेट का क्या मतलब होता है? फॉर्मेटिंग जिसको बोलते हैं. What does formatting or format means? That means how it should look like. Output in format basically means input format. Okay, 1 minute. मैम ये 105 कहाँ से आया? मतलब देख के लिखना पड़ेगा. Okay, now we were discussing the in format. In format's full form is input format. Let me write it here. Where in format means input format. That means how the input is given. Okay, now input was given in the form of DMY. Okay, if you look over here, we have DMY. It's a standard Italian format and उसके लिए conversion क्या है? 105. ठीक है. Here it is showing that it's YY, but actually में वो with और without century दोनों consider करेगा. Okay, क्या आपको ये सारे फॉर्मेट्स याद रखने हैं? नो. द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वन इज 105. 105 का इनपुट फॉर्मेट कैसा होगा? DMY with hyphens. And the another used one is 103, which says DMY with the slashes. बाकी के लिए आप गूगल कर सकते हो, बट ये दो चीजें याद रखो. द प्रोजेक्ट्स दैट यू आर गोना वर्क और द फाइल्स दैट यू आर गोइंग टू वर्क विद, एवरी फाइल विल हैव आइदर ऑफ दीज टू फॉर्मेट्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स. ठीक है. बट मान लो कोई और फॉर्मेट आ गया तो यू कैन गूगल इट आउट, क्योंकि ह्यूमन इट्स नॉट पॉसिबल कि आप सारे फॉर्मेट्स याद रखो. ठीक है. अगर कुछ एक्सेप्शन आ गई है कि कुछ और फॉर्मेट है, तो मान लो डेट्स में डॉट यूज हो रखा है, तो उस केस में क्या यूज करोगे? 104. किसमें? इनपुट फॉर्मेट मींस इनपुट कैसे दिया. ये जो फॉर्मेट है ना, ये आउटपुट का नहीं है, ये इनपुट का है. ठीक है. तो इट्स अ वेबसाइट विच इज कॉल्ड SQL Shack. मतलब ऐसे करके ये वेबसाइट है. यहाँ पे देख सकते हो, आपको W3 स्कूल्स पे भी मिल जाएगा. ठीक है. मैम ये केवल DMY के लिए यूज होंगे ना? अगर हमें MDY करना है तो वो बाय डिफॉल्ट ले लेगा. MDY क्या करना है? आउटपुट दिखाना है या इनपुट MDY में है? आउटपुट दिखाना है मैम. इनपुट यस, इनपुट अगर MDY उसके लिए फॉर्मेटिंग, उसके लिए फॉर्मेट फंक्शन यूज करोगे. डायरेक्टली नहीं होगा वो. ये जो सारी चीजें हैं ना, ये आपको बता रही है कि आपका इनपुट कैसा है. इनपुट इट मींस हाउ दिस डेट इज बीइंग एंटर्ड. ओके. आउटपुट विल ऑलवेज बी इन द फॉर्मेट ऑफ YMD. ओके. बट इफ यू वांट टू चेंज द फॉर्मेट, आप चाहते हो कि आउटपुट आपका किसी और फॉर्मेट में आए, लाइक DMY में आ जाए, तो उसके लिए फॉर्मेट फंक्शन है. ओके. ठीक है. ओके, श्योर, थैंक यू. अच्छा, let's try one more thing. If I have select the date is, let's say 21/10/2023 as date 1, and I use cast on this, cast 21/10/2023 as date. And if I execute this, look at the error. Conversion failed when converting date from the character string. अब यहाँ पे डिफरेंस, यहाँ पे एरर क्यों आया? Like I said, first part will always be treated as month,
21 तो कोई मंथ नंबर होता नहीं है, तो सिस्टम ने एरर थ्रो कर दिया। इसमें ऑटोमेटेड नहीं है कि 21 अगर मंथ नहीं है तो उसको डे बना दो, वो नहीं होगा। ओके, तो इसके लिए आप क्या यूज करोगे फिर? लेट मी कीप दिस एरर ओवर हियर, एरर। ओके, वी आर गोइंग टू यूज कन्वर्ट। किसको कन्वर्ट करना है? द सेम डेट दैट वी आर टेकिंग, कॉमा, sorry, here it will be new data type, which will be date. What will be the in format? The format is what now? DMY, or DMY के लिए format is 10. Okay, is it reading it correctly? Yes. Okay, what do you think will happen now? अब क्या होगा? What it's format changed. Oh sorry, ये भी small में आएगा. Why we are not using capital M as small m? Minutes. अगर आपने स्मॉल एम यूज कर दिया ना तो वो मिनट्स का दे देगा, और मिनट्स यहाँ पे कितने आएंगे? 000, टाइम स्टैम्प है ही नहीं है। ठीक है, तो द डिफरेंस इज, अगर मंथ्स पार्ट कंसीडर करने हैं तो इट विल बी कैपिटल एम, अगर मिनट्स पार्ट कंसीडर करने हैं तो इट विल बी स्मॉल एम। ओके, डन। कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्टैंडर्ड फॉर्मेट वो सेट हुआ हुआ है। पाइथन में भी यही होगा। इफ यू वांट टू चेंज द डेटा टाइप ऑफ द डेट और फॉर्मेट उसका चेंज करना है तो इट विल बी इन द लोअर केसेस। एक्सेल में था कि अपर लोअर दोनों चल रहे हैं। Yes, any doubts in cast and convert? नहीं, वो परमानेंट चेंजेस नहीं होंगे। Yes, any doubts guys in the dates cast and convert? बात तो एक है, कास्ट लगाओ कन्वर्ट लगाओ। तो यहाँ पे बिगिन लगा दो। करना क्या चाहते पहले ये बताओ, खुद कुछ भी ट्राई कर लिया करो। अब तो ये आप खुद से भी देख सकते थे। इसमें हुआ ये है कि मेमोरी स्टोरेज इंक्रीज हो गई है। इंटीजर वर्क्स फॉर 32 बिट्स 4 बाइट्स, यहाँ पे उसको 64 मिल जाएंगे। अब ये करके क्या अचीव हुआ मुझे समझ में नहीं आया। छोटे बड़े में क्यों नहीं होता? बड़ा छोटे में नहीं होगा। यहाँ पे डायरेक्टली करोगे तो नहीं होगा, डेटा टाइप कन्वर्जन से करोगे तो हो जाए। ओके, so the next topic is subqueries, very very important. No case study is going to work without subquery and joins. What's the meaning of the term nested functions? So what will be subquery? A query within a query. Okay, subquery means a query within a query.
अभी intro तो देना दो. There are 3 types of subqueries. First, ordinal subquery, or you can say ordinary subquery. Second, inline view subquery. Third is your cross product query or anything you can say, but basically it's not used at all. Ordinary subquery means when a subquery is written within one of the options: select, where, or having. Inline subquery is when a subquery is written within from statement. And cross product subquery, or you can call it as correlated subquery, one and the same thing. Correlated subquery means it's rarely used because it results in Cartesian product. Where did we study this term? Which type of join? Cross join. Okay, it results in Cartesian product. The table will become very large. That means it's a cross product table, so it is not used at all. Okay, but the main are these two. All right, if there is any subquery, मान लो select के अंदर select है, या where के अंदर select है, या having के अंदर select है, ठीक है, तो ये सारी किस टाइप की subqueries होंगी? Ordinary. बट अगर आपने from के बाद select लगा दिया तो कौन सी subquery बनेगी? Inline. This is the difference. ठीक है, तो how these subqueries will work, that we'll see after the break. ठीक है, after the subqueries we are going to start with the joins. Okay. So it's 10:51. We'll start at 11:10. All right. So before we start working on the examples of subqueries, any doubt so far? Online and offline guys, any doubt? Okay. So question number 1. Find the total sales by each category. Select everything from TBL order. Tell me, what will be the query for this question? Select. First column will be category. Second column will be sum of sales. As total sales. What next? Group by. Reason is we are using the combination of non-aggregated and aggregated columns. So group by category. Any doubts in this query? Okay. Question number 2. Find the total sales from the given data. Select everything from TBL order. This is the table. What will be the query for this question? What it will return? A single value, a single column, or a table? Single value. Okay. What that value should be? So instead of asterisk, it will be sum of sales, as I can say overall sales. Do I need group by? No. Reason is you are not using any non-aggregated column, so no need to use group by. Okay. Let's execute this. All right. Let's execute both the selects.
थर्ड क्वेश्चन, find the percentage of sales done by each category. What will be the query? What will be the logic? Simple, category wise sales को overall से divide करोगे. Okay, so let's combine the above two questions. Select category, comma, sum of sales, as I can call it as total sales, from order table. Obviously group by has to be used. Okay, so what I want is I want to generate 3 columns. एक कॉलम में कैटेगरी आ जाए, दूसरे में उसका कितना सेल्स है, तीसरे में परसेंटेज आ जाए. Okay, now in order to get that percentage वाला कॉलम, what will be the logic? क्या क्या डिवाइड करना है आपको? 14778 को डिवाइड करोगे इसके साथ, करेक्ट? So now the query will be what? Third column that we are trying to create, sum of sales, जो कि टोटल सेल्स है, जो कि आपको ये आउटपुट दे रहा है, डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करोगे? ओवरऑल सेल्स के साथ. बट ओवरऑल सेल्स आपने निकाली कैसे हैं? ये क्वेरी के थ्रू. अब ये पूरी की पूरी क्वेरी यहां पे जाएगी. Okay, and sub queries are always written within the round brackets. Okay, now आप यहाँ पे अकेले ओवरऑल सेल्स तो नहीं लिख सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है. करेक्ट? ये आउटपुट कहीं पे स्टोर हो रही है क्या? नो. तो ओवरऑल सेल्स तो नहीं लिखोगे. क्या आप सम ऑफ सेल्स लिख सकते हो अकेला सम ऑफ सेल्स? पॉसिबल ही नहीं है. अगर आप सम ऑफ सेल्स करने जाओगे ना तो ये 4778 को 14778 से डिवाइड कर देगा. टू गेट दैट ओवरऑल सेल्स आपने एक आउटर क्वेरी चला दी. अब जब मैं इस क्वेरी को रिटर्न करूंगी, ये मुझे ओवरऑल सेल्स ही दे रहा है. ठीक है, अब ये जो वैल्यू आई है इस क्वेरी को रन करने के बाद, ये अब हर सम ऑफ सेल्स को डिवाइड करेगा जो आपने सेल्स निकाली है कैटेगरी लेवल. ठीक है, तो व्हेन आई एग्जीक्यूट दिस क्वेरी, लुक एट द आउटपुट. परसेंटेजेस आर नथिंग बट द रेशियोज बिटवीन 0 to 1. अगर इसको परसेंटेज में करना तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो. ठीक है. ऑल्सो डू यू हैव एनी कॉलम नेम? नो. रीजन इज दिस इज अ कॉलम दैट यू आर क्रिएटिंग योरसेल्फ. ये पूरा का पूरा कॉलम खुद से बनाया गया. ओके, सो लेट्स कॉल इट एज सेल्स परसेंटेज. और अंडरस्कोर के अलावा कुछ यूज कर रहे हो तो बेटर है ब्रैकेट्स. ओवरऑल सेल्स कैसे स्टोर करोगे? आप स्टोर थोड़ी ना कर रहे हो ओवरऑल सेल्स को कहीं पे. ये स्टेटमेंट कोई आउटपुट थोड़ी ना स्टोर कर रही है कहीं पे. स्टोर तो कहीं पे भी नहीं हो रहा, ये सिर्फ आउटपुट लेके आ रहा है. सेलेक्ट कभी भी कुछ भी स्टोर नहीं करता है. ओवरऑल सेल्स हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. एलियस नहीं यूज करना है मत करो, तब भी चलेगा. ये हमने कल भी देखा था, क्वेरी के अंदर अगर आप एलियस नहीं लिखोगे तब भी चलेगा. लुक एट दिस. डन. One more question. Find the products who have generated sales more than average sales. क्या मतलब है इस क्वेश्चन का? आपको सबसे पहले प्रोडक्ट वाइज सेल्स निकालनी है. अब आपको सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स की डिटेल बतानी है जिनकी सेल्स ओवरऑल एवरेज से बड़ी है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सॉल्व दिस पार्ट फर्स्ट. पहले तो समरी बनाऊंगी. हाउ टू गेट द प्रोडक्ट वाइज सेल्स. सेलेक्ट प्रोडक्ट, सम ऑफ सेल्स as total sales we can say from order table. Oh sorry, group by. ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, ये सेल्स हैं. अब आपको सिर्फ उन्हीं सेल्स को डिस्प्ले कराना है प्रोडक्ट का जिनकी ओवरऑल एवरेज सेल्स से ज्यादा सेल्स हुई है. तो क्या लगाओगे? वेयर या हैविंग?
सब क्वेरी लगेगी, फिल्टर करना है ना। फिल्टर कैसे करोगे? दो ऑप्शंस है वेयर एंड हैविंग के, क्या लगाओगे? हैविंग। रीजन इज कि आपको ये टोटल सेल्स को फिल्टर आउट करना है, और ये टोटल सेल्स वाला कॉलम हैज बीन क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ सेल्स, यानी कि एग्रीगेशन। ओके, तो हैविंग विल बी आफ्टर ग्रुप बाय। हैविंग अब क्या लिखोगे? क्या मैं टोटल सेल्स लिख सकती हूँ? नो, एलियासेस आर ओनली अलाउड इन ऑर्डर बाय। तो अब क्या लिख सकते हो? सम ऑफ सेल्स ग्रेटर देन व्हाट? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये एवरेज सेल्स ना प्रोडक्ट के बेस पे निकाल देगा, हर प्रोडक्ट की एवरेज निकाल देगा वो। आपको तो ओवरऑल चाहिए, तो यहाँ पे लगेगी सब क्वेरी। ऑल्सो अगर मैं ये चीज सब क्वेरी में ना करूं, ये देखो क्या हुआ है, हर प्रोडक्ट की एवरेज सेल्स निकल गई है। तो ये तो लॉजिक ही गलत है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे? हैविंग के बाद यहाँ पे लिखोगे सेलेक्ट, और ऑब्वियसली सब क्वेरी स्टार्ट्स विद द ब्रैकेट। क्या सेलेक्ट करना है? एवरेज सेल्स। और कहां से निकालनी है? ऑर्डर टेबल। यहाँ पे एलियस लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज दैट एलियस विल नेवर बी यूज्ड एनीवेयर, ठीक है। नाउ व्हेन आई एग्जीक्यूट ओनली दिस पार्ट, दिस इज द ओवरऑल एवरेज सेल्स 4126, ठीक है। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट द क्वेरी, और ऑल्सो लेट्स नॉट यूज हैविंग, इतना लगाते हैं अगर सिर्फ। तो देयर वर 8 प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये चीज लगाने के बाद getting the answer 7 products. Okay, so this is the use case of. Okay, also what type of subquery this is? Ordinary or inline? Ordinary. Ordinary subqueries are those जहां पे select कहां पे repeat हो रहा है? Select where having. Okay, another question. Question ही कोड ही लिखते हैं। Select category, sales, sorry not sales, sum of sales. From order table, okay. Outer select, select everything from. From के बाद जनरली हम लोग क्या लिखते हैं? टेबल नेम। अब मैं टेबल नेम नहीं लिख रही हूँ, इंस्टेड ऑफ टेबल नेम, एक्चुअल टेबल नेम की जगह पे मैं क्या लिख रही हूँ? वो टेबल जिसने मुझे कोई आउटपुट दिया होगा पहले से, ठीक है। अब ये कौन सी टाइप की सब क्वेरी है? इनलाइन। क्यों? क्योंकि सेलेक्ट कहां पे है? फ्रॉम के साथ, ठीक है। सेकेंड रूल, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो एरर आएगा। द रीजन इज फ्रॉम के साथ हमेशा टेबल नेम लगता है। आर यू प्रोवाइडिंग एनी टेबल नेम? आपने ये क्वेरी तो लिख दी, इस क्वेरी ने आपको ये आउटपुट दिया, डू वी हैव एनी नेम फॉर दिस टेबल? तो आपको इसको नेम देना पड़ेगा एज एक्स। फ्रॉम नेवर वर्क्स विदाउट टेबल नेम, चाहे परमानेंट टेबल नेम हो या टेम्पररी। ओके, नाउ व्हेन आई एग्जीक्यूट दिस होल क्वेरी, इट इज गोना गिव मी द सेम आउटपुट। मतलब हो क्या रहा है यहाँ पे? आपने एक अंदर कोई क्वेरी चलाई, उसने कुछ आपको आउटपुट दिया, ठीक है। अब उस आउटपुट को अब बाहर कुछ भी कैलकुलेशन और उसकी कर सकते हो। मान लो अगर आपको ऑर्डर बाय लगाना है, ठीक है, तो यहाँ पे नीचे ऑर्डर बाय लग जाएगा, हायरार्की तो सेम है, सीक्वेंस सारा सेम रहेगा। ऑल्सो अगर आपको एक ही बजाय दो की बजाय एक कॉलम प्रिंट कराना है, तो आप यहाँ पे क्या चूज करोगे? कॉलम नेम, वो कॉलम नेम जो सेलेक्टिंग यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। अगर मैं कैटेगरी करूं तो सिर्फ कैटेगरी नेम्स आएंगे। अब जब मैं इंटरनल क्वेरी को एग्जीक्यूट कर रही हूँ, मेरे पास दो कॉलम्स हैं, एक है कैटेगरी और एक मान लो टोटल सेल्स, ठीक है। एस्ट्रिक जब हम लगा रहे थे तो सारा का सारा कॉलम्स का डेटा आ रहा था। अब मुझे सिर्फ सेल्स प्रिंट करानी है, ये सिर्फ सेल्स वाला कॉलम। तो क्या आप सम ऑफ सेल्स दोबारा लिखोगे? नो, आप सिर्फ एलियस नेम लिखोगे, यहाँ पे एलियस नेम्स चल जाएंगे, ठीक है। एंड व्हेन आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस, यू विल गेट द आउटपुट, ठीक है। तो अगर आपको एलियासेस किसी टेबल में यूज करने हैं तो बेटर है कि बाहर सब क्वेरी लिख दो,
फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने ये क्वेश्चन करा था यहाँ पे क्या हाँ ये वाला ओके दिस विल गिव यू द ऑर्डर डेट्स ऑफ द ऑर्डर टेबल। अब एक कॉलम आपने बना दिया गेट डेट का, करंट डेट, दो कॉलम्स बन गए। अब दोनों का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, डेट डिफ लिखते थे, उसके अंदर गेट डेट दोबारा यूज हो रहा था। रीजन इज एलियासेस यूज नहीं हो सकते, यहीं पे यहाँ पे भी यही किया था हम लोगों ने, ये देखो गेट डेट दोबारा लिख रहे थे। ठीक है, अब आप चाहते हो कि गेट डेट आपको दोबारा ना लिखना पड़े, आप उसका एलियस नेम यूज कर लो, तो फिर बाहर क्या लगाओगे, सेलेक्ट, select everything from, just to improve the readability I am providing the indentations। ठीक है, this will close over here and we know from के साथ हमेशा टेबल नेम आता है, तो आप कोई भी टेबल नेम दे दो, मान लो डेमो देंगे। ठीक है, अब जब मैं इस क्वेरी को रन करूंगी आउटपुट सेम ही आएगी जो इंटरनल क्वेरी की है, उसमें तो कोई फर्क नहीं है। ठीक है, select everything from, ओके ठीक है। अब दोनों कॉलम्स का डिफरेंस निकालना है। आपने दो कॉलम्स लिए जो ऑलरेडी इंटरनल क्वेरी के थे, इसके अलावा आप बना रहे हो तीसरा कॉलम विच इज डेट डिफ। किस किस का डिफरेंस निकालना है, किस इंटरवल पे निकालना है, मान लो ईयर्स है। ठीक है, स्टार्टिंग डेट में कौन आएगा, ऑर्डर डेट, एंड डेट में कौन आएगा, करंट डेट। यहाँ पे यू विल बी एबल टू यूज दी एलियास एज डिफरेंसेस। ठीक है, लेट्स एग्जीक्यूट, लुक एट द आउटपुट। ठीक है, तो सब क्वेरीज कैन मेक योर टास्क इजी व्हेन यू वांट टू वर्क विद द एलियासेस। ओके, okay, next question is, okay, before I start working on the other questions or the topic, any doubts guys? Sub queries के examples we'll see when we are going to start with the case study. Okay, which sub query is this, inline view, क्यों, क्योंकि from के बाद लिखा गया है। ठीक है, okay, what is calculated field, creating a new column, a new column can be created using case, when, then, else, and 5 keywords. It is also used for groups and events. तो case when के दो फायदे हैं, पहला you can create the calculated fields, second is you can work with the groups and events. Creating a new column based on conditions. Calculated fields बोल दो या आप इसको conditional columns भी बोल सकते हो, both are correct. Okay, question, categorize the sales as high or low based on the cutoff. This, what's the meaning of the question?
जो सेल्स 2100 से ऊपर होंगी दे विल बी कैटेगराइज्ड एज हाई और अदरवाइज दे विल बी लो। एक्सेल में ये क्वेश्चंस कैसे करते हैं आप इन एक्सेल? इफ क्या लिखते हैं? सेल्स ग्रेटर देन 2100 it will be high, else it will be low. That's it. सेम काम आपको किससे करना है अब? केस व्हेन देन एल्स एंड। ओके, लेट्स सी हाउ वी कैन डू इट। उससे पहले लेट मी राइट डाउन द सिंटेक्स। केस व्हेन कंडीशन 1 then true value, else false value, and look at the 5 keywords: case, when, then, else, and. Okay, अगर मान लो मल्टीपल कंडीशन चेक करनी है तो ये when बार बार रिपीट होगा। when condition 2 then true value 2. And this process will keep on going. Okay, any doubts in the syntax? Select everything from TBL order. Okay, I want to create a new column, right? So after asterisk what will you write? Comma. अब न्यू कॉलम कैसे बनाओगे? केस व्हेन. Okay, so case, again this entire thing is a one line statement. Okay, we are breaking into multiple lines. When, what will be the condition? When sales greater than 2100 then high, else low. That's it. Okay, अब ये पूरी चीज एक नया कॉलम देगा आपको। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी नो कॉलम नेम आएगा, तो आपको कॉलम नेम देना है। एंड के बाद डायरेक्टली क्या लिखोगे? एज, लेट्स कॉल इट एज लेवल्स। ओके, लेट्स एग्जीक्यूट। लुक एट द आउटपुट। ओके, लो है क्या? कहीं सभी हाई हैं? एनीवे द लॉजिक इज कंडीशन चेकिंग। ठीक है, बोलो। अच्छा चलो ठीक है। ओके, आई विल गो। लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन एंड यू गाइस हेल्प मी आउट विद द कोड। ठीक है, जहां पे डाउट आएगा लेट मी नो। क्वेश्चन इज ओके, नो, कैटेगराइज the products as, okay, category 1, इसमें आपके आएंगे लेट्स से एक्सेसरीज, बाइंडर्स एंड टेबल्स। कोई भी प्रोडक्ट अगर इन तीनों को सेटिस्फाई करेगा उसकी लेबल क्या हो जाएगी? कैटेगरी 1। ठीक है, कैटेगरी 2, इसमें आप डालोगे लेट्स से फोन्स, मशीन्स, दैट्स इट। अदर्स में कौन जाएगा? लेफ्ट ओवर्स। ओके, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज, आपके पास ऑलरेडी ये टेबल है। इस टेबल के लिए अब आपको एक नया कॉलम बनाना है। उस नए कॉलम की डेटा क्या होंगे? कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और अदर्स। बट ये कैटेगरीज बनेगी कैसे? अगर तो प्रोडक्ट आपका एक्सेसरी है तो कौन सा लेबल आएगा? कैटेगरी 1। अगर तो बाइंडर्स है, कैटेगरी 1 अगेन। क्वेश्चन समझ में आया सबको? ठीक है, सबसे पहले तो एक्चुअल टेबल प्रिंट कराओ। सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम टीबीएल ऑर्डर। दिस इज द एक्चुअल टेबल। इसके अलावा अब आपको एक नया कॉलम बनाना है। नया कॉलम बनाने के लिए आपके पास कौन है? केस व्हेन। ठीक है,
अब अगर नया कॉलम बनाओगे तो ऑब्वियसली बात है कॉमा लगेगा बाद में, ठीक है। सिंटेक्स क्या है? केस, व्हेन। अब कंडीशंस बताओ। प्रोडक्ट, ठीक है, व्हेन, प्रोडक्ट, इन, इनके साथ क्या यूज होता है? ब्रैकेट्स। व्हाट विल बी द फर्स्ट वैल्यू? एक्सेसरीज, सेकंड बाइंडर्स, थर्ड tables. If this condition is true, then क्या हो जाएगा? Category 1. Any doubts in this statement? Okay. All right. उसके बाद when product in, अब conditions क्या आएंगी? Phones and machines. Then category 2. इसके बाद अब तीसरी कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है, जो भी पीछे बच जाएगा अदर्स, ठीक है। एंड अब कॉलम नेम भी देना है, मान लो कैटेगरीज। एनी डाउट इन दिस कोड? ऑनलाइन गाइस, एनी डाउट इन दिस कोड? Look at this. Accessory, binders, tables, accessories. Category 1. Phones in the category 2. ठीक है, machines, ये सब कैटेगरीज में आएंगे। बाकी जो भी पीछे रह गया, लाइक ये चेयर्स बचे थे, इनको किस में डाल दिया? ठीक है। जैसे हम दोबारा सिलेक्ट फॉन्ट का टेबल आउट करेंगे, उससे मतलब ये कैटेगरी वाला कॉलम को किसान कॉलम आ गया। अगर सेलेक्ट एवरीथिंग करोगे दोबारा, हाँ, तो मैम अगर हम चाहें कि ये कैटेगरी मतलब परमानेंट इस टेबल में ऐड हो जाए, आप कॉपी बना दो। जो फर्स्ट मेंटरशिप क्लासेस में हम लोगों ने लिखा था ना, सेलेक्ट एवरीथिंग इनटू टेबल नेम फ्रॉम प्रीवियस टेबल, तो आप क्या कर सकते हो? बाहर एक क्वेरी चला दो। आपको ये सारा आउटपुट एक टेबल में स्टोर करना है, ठीक है। आप क्या करोगे? बाहर एक सेलेक्ट चलाओगे, सेलेक्ट एवरीथिंग इनटू, ठीक है। टेबल नेम मान लो आपने दे दिया डेमो, नहीं डेमो नहीं, कुछ और दे देते हैं, प्रोडक्ट इन्फो, ये टेबल नेम आ गया। उसके बाद फ्रॉम आएगा। किससे कॉपी करोगे आप ये सारा डेटा? ये जो अभी आपने टेबल बनाया, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगेगी और ये ब्रैकेट यहाँ पे बंद होगी। फ्रॉम के साथ हमेशा क्या आता है? टेबल नेम, एक्स वाई जेड एबीसी, अपना नाम कुछ भी दे दो, ठीक है। ऑल्सो अब मेरे को ना ये सारी स्टेटमेंट्स ब्रैकेट के अंदर लेके जानी है रीडेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए। तो क्या मैं एक एक बार सारी लाइन के आगे स्पेस लगाऊंगी? ये तो बहुत ऑकवर्ड चीज है, राइट? इतना नहीं कर पाओगे। तो देयर इज अ शॉर्टकट। यहाँ पे कर्सर रखोगे जहां पे आपको स्पेस चाहिए, ऑल्ट की को प्रेस करोगे और इसको नीचे ड्रैग कर दोगे, एक बहुत बड़ा कर्सर बन जाएगा। अब आपको टैब प्रेस जो भी करना है कर दो, ठीक है। ये नहीं टेबल जिसका हमने नाम दिया अभी। लेट्स एग्जीक्यूट, देखते हैं क्या होता है। 22 रोज अफेक्टेड। अब अपना डेटाबेस को यहाँ पे रिफ्रेश कर लो। ये दिख रहा है प्रोडक्ट इन्फो। तो बेसिकली नई टेबल बनाने के लिए आपने सब क्वेरी यूज करी, और कौन सी सब क्वेरी यूज हुई? इनलाइन की, ठीक है। यस, एनी अदर डाउट? ये जो आउटपुट टेबल बनाया था, इसका अपना तो कोई नेम नहीं था। टीबीएल ऑर्डर तो यहाँ तक प्रॉफिट तक था ना। ये जो आउटपुट आई है उसका टेम्पररी नेम हम लोगों ने क्या दे दिया? एक्स। इसके बिना आपका फॉर्म चलेगा नहीं, ठीक है। यस, एनी अदर डाउट गाइस? फ्रॉम कंडीशन में एक्स मैंडेटरी है, राइट? एक्स, एबीसी, डेमो, अपना नाम कुछ भी दे दो। मेन चीज ये है कि फ्रॉम के बाद अगर आपने सब क्वेरी लगाई है तो उसके बाहर आपको एक टेम्पररी टेबल नेम देना होगा, वरना इट विल गिव यू एन एरर, ठीक है। आप एक्स दे दो, एबीसी दे दो, कुछ भी रैंडम दे दो, वो सब चलेगा, ठीक है। एनी अदर डाउट्स? जैसे हमने प्रोडक्ट बना दिया तो इसमें हम नया कॉलम ऐड कर सकते हैं परमानेंटली, हमें नया टेबल बनाना पड़ेगा। किसमें नया कॉलम ऐड करना चाहते हो? जैसे प्रोडक्ट इन्फो में हम कोई परमानेंटली नया टेबल ऐड करना चाहते हैं, जैसे हम सभी बना रहे हो कि इसको भी जो चला रहे हो पूरी जाती है, हमें उसको स्टोर करने की जब प्रोडक्ट इन्फो में कॉल
सारा मतलब मैंने बात कॉलम करा, तो वो हो सकता है हम नया टेबल बना सकते हैं। ये है ना आपका समराइज टेबल, जो समरी बनाई है। अब इसमें आप बोलो ना कि अगर कुछ नया ऐड करना है तो हाँ ऑल्टर से कर सकते हो। ऑल्टर की कल हमने कमांड पढ़ी थी ना, ऑल्टर टेबल टेबल नेम ऐड कॉलम। ठीक है, कौन सा कमांड? जैसे हमने कैटेगरी बनाई तो उस कैटेगरी को उसी के साथ ऐड कर सकते हैं वो पुराने टेबल में। कर सकते हो, फिर वो ऑल्टर करना पड़ेगा ना आपको। कर सकते हो, क्या वो ऑलरेडी कमांड पहले तो आप खाली कॉलम बनाओगे, ऑल्टर टेबल टेबल नेम ऐड कॉलम कैटेगरीज, कैटेगरी सारी नल होंगी, फिर उसको अपडेट करने बैठोगे आप, और वो बहुत लंबा प्रोसेस होगा। ठीक है, तो उससे बेटर ऑप्शन क्या है, आप उसकी कॉपी बना दो। ठीक है, हाँ, yes, any doubts guys, any other doubts from the sub queries and case when? हाँ जी, drop column, alter table table name, drop column, remove, वही column delete हो जाएगा। Okay, joins now. A quick revision. We have already discussed in detail in Power BI. So data can be combined by two methods. One is known as data join or merge. Second is known as data appending or concat. Okay. Now, when do you perform the data join? When entities are belonging to different or same set? Different set. Okay. Whereas appending will be performed when two tables belong to the same entity. Number of columns must be same. The data type of each column of the two tables must be same. Names can be anything. Okay. What are the different categories of joins? Inner, left, right, full outer, self, cross, natural. Cross use nahi hota. Okay. What is inner join? Common data between the two tables. What is left join? All records from the left, only the common data from the right. What is right join? All records from the right, but only the common from the left. What is full outer? None of the records will be missed out. So it's a combination of inner plus left plus right join. Okay. Then we have cross join. Each record will get its combination with the other records. Hence it returns in the very lengthy table. Hence it is not used. और यही output आपका आएगा correlated subquery के साथ. इसी वजह से correlated subquery use नहीं होती है. ठीक है. Then we have self join. What was self join? Table joining with itself. That means left table, right table दोनों same रहेंगे. Okay. And what was natural join? It's a special case of inner join only, provided कि दोनों tables में दो जो columns या एक column जो common है उसका नाम भी common है. ठीक है. So there are 4 ways to append the data: union, union all, intersect, accept. Okay. What's the difference between union and union all? Union will take care of duplicates यानी distinct records देगा. दूसरा sorting भी होगी. ठीक है. यूनियन ऑल क्या करेगा, वो सिंपली दोनों को कंबाइन करेगा, उसमें डुप्लीकेट्स ट्रीट नहीं होंगे. ठीक है. व्हाट इज इंटरसेक्ट? कॉमन रिकॉर्ड्स. और एक्सेप्ट क्या होता है, एक टेबल में है दूसरे में नहीं है. फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं मुझे ऐसे मैन्युफैक्चरर्स का डेटा बताओ जिनकी हाईएस्ट सेल्स 2019 में भी थी और 2020 में भी थी, तो क्या लगाओगे इसमें? इंटरसेक्ट. कॉमन डेटा निकाला ना 2019 और 2020 का. यूनियन, इंटरसेक्ट. ऐसे मैन्युफैक्चरर्स जिनका डेटा जिन्होंने सेल्स 2019 में भी हाई करी थी और 2020 में भी हाई करी है, तो कॉमन डेटा होगा. कॉमन डेटा के लिए कौन है? इंटरसेक्ट. ठीक है. ऐसे मैन्युफैक्चरर्स जिन्होंने 2019 में तो बहुत ज्यादा सेल्स दी थी बट 2020 में नहीं दी,
ऐसे मैन्युफैक्चरर्स दोज हु हैव गिवन द हाईएस्ट सेल्स इन 2019 बट नॉट इन 2020 एक्सेप्ट, ठीक है, उन सारे मैन्युफैक्चरर्स का डेटा जिन्होंने हाईएस्ट सेल्स 2019, 2020, 2021 में दिए हैं, यूनियन, ठीक है। तो आई डोंट थिंक मुझे ये टेबल्स दोबारा बनाने की जरूरत है, अदरवाइज एक काम कर सकते हैं, आई विल शेयर दिस फाइल विद द टुडेस क्लास फाइल, ठीक है। वैसे पावर बीआई में शेयर हो गई थी बट एक बार फिर से शेयर कर दूंगी, ओके। All right, look at this file. This case study is already shared with you in the previous class file, which is your case study 2. ठीक है, case study 2 की ये कौन सी फाइल है? Create table joins. Okay. Now look into this table file. What are the different tables that we have? One is TBL student, another is course, third is mapping. इसके अलावा बाकी सब जगह क्या हुआ है? Data insertion. How many constraints are used on the first table? Identity, primary key, not null. Okay. What about the course table? Identity, primary key, not null. And the mapping table में क्या है? This is basically the foreign key creation. अब इसमें हुआ क्या है? स्टूडेंट आईडी है एक कॉलम जिसकी डेटा टाइप क्या है? इंटीजर, ठीक है। टेबल मैपिंग के अंदर दो कॉलम्स हैं, एक है कोर्स आईडी, एक है स्टूडेंट आईडी। अब ये जो स्टूडेंट आईडी कॉलम है टेबल मैपिंग का, ये किसको रेफर कर रहा है? स्टूडेंट आईडी को, बट कौन से टेबल का? और फॉरेन की डेफिनेशन क्या थी? इट रेफर्स टू द प्राइमरी की ऑफ द अदर टेबल, ठीक है। तो द कीवर्ड व्हिच इज बीइंग यूज्ड ओवर हियर इज रेफरेंस। आप चाहे तो फॉरेन की भी लिख सकते हो, ठीक है। So all we need to do is just execute this file now, okay. Done. पहले टेबल में 5 रिकॉर्ड है, दूसरे में 10 है, तीसरे में 11 है, ओके। एंड दिस इज द क्वेश्चंस वाली फाइल, ओके। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। दिस इज अ मिनी केस स्टडी जो अभी 3 टेबल बनाए हैं उसके बेसिस पे। रिमेंबर पीडीएफ में एक स्कीमा था, टीबीएल कस्टमर, टीबीएल वर्क ऑर्डर कंप्लेंट, ये उसके क्वेश्चन, ठीक है। बट इनकी बात बाद में करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट 4 क्वेश्चंस। लेट्स डिस्प्ले द 3 tables first. Select everything from TBL course. Select everything from TBL mapping. Select everything from TBL student. These are the 3 tables. Look at the outputs. Okay, now tell me one thing. If I'm talking, this is a course table, this is a mapping table, this is a student table. पहले 2 टेबल ज्वाइन हो सकते हैं क्या? या कंबाइन हो सकते हैं? टू बी प्रिसाइज, ज्वाइन ना बोले अगर, इन दोनों टेबल्स को मर्ज कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ कोर्स आईडी। सेकंड और थर्ड टेबल को मर्ज कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट आईडी। फर्स्ट और थर्ड टेबल को कर सकते हो, फर्स्ट एंड थर्ड टेबल, नो, कोई भी कॉमन कॉलम नहीं है। तो अगर फर्स्ट और थर्ड टेबल को ज्वाइन करना है तो आपको सेंटर वाले टेबल की हेल्प लेनी पड़ेगी, ओके। ऑलराइट, लेट मी राइट दीस स्टेटमेंट्स अबव। अब बताओ व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 1। एवरीवन रीड द क्वेश्चन। While performing the joins, आपको 2 चीजें पहले तो आइडेंटिफाई करनी है। फर्स्ट थिंग, कौन से टेबल्स यूज होंगे, सेकंड कौन सा ज्वाइन लगेगा, ठीक है। तो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन सेइंग? व्हाट यू वांट टू डिस्प्ले? स्टूडेंट डिटेल्स एंड कोर्सेज इन विच दे आर इनरोल्ड। तो कौन से टेबल्स यूज होंगे? अब एक तो स्टूडेंट टेबल आएगा, दूसरा कौन सा होगा? फर्स्ट टेबल स्टूडेंट के साथ मर्ज हो सकता है क्या? फर्स्ट टेबल और थर्ड टेबल में कोई कॉमन कॉलम है? नो, ओके। तो यू कैन मर्ज दिस थर्ड टेबल विद द सेकंड टेबल।
एनीवे मेरे को ये बताना है कि हर स्टूडेंट कौन कौन से कोर्सेज में इनरोल्ड है, तो वो तो इन्फॉर्मेशन मेरे को सेकंड टेबल से भी मिल रही है क्योंकि मेरे को कोर्स आईडी मिल रही है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कौन सा ज्वाइन लगेगा? वाई इनर ज्वाइन? वाई इनर ज्वाइन? वो तो लेफ्ट में भी होंगे, राइट में भी होंगे। हाँ, तो फिर इसमें कौन सा ज्वाइन लगेगा? इनर ज्वाइन। रीजन किनका? कौन से स्टूडेंट्स का? जिन्होंने इनरोल किया है। ठीक है, ओके। तुषार आपने बोला राइट ज्वाइन, क्यों? जैसे हमारा ये प्रायोरिटी है कौन? लास्ट वाली टेबल, तो लास्ट वाली टेबल आपकी स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट डिटेल्स। ठीक है, स्टूडेंट का सारा डेटा रहेगा उससे राइट में लगेगा। हाँ, वो डिपेंड करता है स्टूडेंट आप कहाँ पे यूज कर रहे हो। अगर स्टूडेंट को आप सेकंड प्लेस पे यूज कर रहे हो तो राइट हो जाएगा, बट अगर स्टूडेंट पहले यूज होगा तो वो लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, एनीवे लेट्स परफॉर्म द ज्वाइन फर्स्ट। सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम फर्स्ट टेबल। मान लो हम लोग चूज कर रहे हैं स्टूडेंट। ओके, अब क्या इसमें पॉसिबिलिटी है कि स्टूडेंट टेबल्स में के अंदर वो इन्फॉर्मेशन भी होगी स्टूडेंट्स की जिन्होंने इनरोल नहीं करा है अब तक? तो क्या मेरे को इनरोल्ड वालों का डेटा दिखाना है या कंबाइंड डेटा दिखाना है? इनरोल्ड का दिखाना है। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि मुझे स्टूडेंट टेबल और मैपिंग टेबल का कॉमन डेटा चाहिए, क्योंकि मैपिंग के अंदर तो उन्हीं की इन्फॉर्मेशन होगी जिन्होंने इनरोल कर रखा है। ठीक है, तो विच टाइप ऑफ ज्वाइन? इनर ज्वाइन। समझ में आया कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा ज्वाइन लगेगा? आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा कि क्वेश्चन उसने क्या बोला हुआ है। ओके, अब ये ज्वाइन किसके साथ करोगे? मैपिंग। कोर्स के साथ तो होगा नहीं क्योंकि कॉमन कॉलम नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करने जाऊं तो एरर आएगा। एरर इसलिए है आपने मेंशन नहीं करा कि कॉमन कॉलम कौन सा है। ओके, तो कॉमन कॉलम के लिए हमारे पास कीवर्ड आता है ऑन। ओके, दूसरी बात, ये टेबल नेम बहुत बड़ा है, एलियस दे दो, इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो। ठीक है, अब क्या कर सकते हो? ए डॉट स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू बी डॉट स्टूडेंट आईडी। ओके, अब आउटपुट समझो। स्टूडेंट आईडी, नेम, डीओबी, फोन, ईमेल, ये तो स्टूडेंट का डेटा हो गया। इसके बाद के जो कॉलम है वो किसके हैं? मैपिंग के। ठीक है, अब इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट आईडी वाला कॉलम 2 बार रिपीट हो रहा है। दूसरी बात, ये वाला स्टूडेंट आईडी का डेटा और ये स्टूडेंट आईडी का डेटा हमेशा मैच करेगा। ठीक है, देयर इज नो पॉइंट कि मैं एक कॉलम को 2 बार दिखाऊं। तो मैं क्या कर सकती हूँ? इंस्टेड ऑफ एस्ट्रिक मैंने यहाँ पे बोला कि सारे कॉलम शो करो स्टूडेंट टेबल से। ए डॉट एस्ट्रिक का क्या मतलब हो गया? सारे कॉलम्स ए टेबल से। बी से क्या शो करना है? कोर्स आईडी। दिस इज हाउ यू डू सबसेटिंग। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करो। लुक एट दिस, तो ये सारे स्टूडेंट्स की डेटा दे रहा। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टूडेंट आईडी 101 की बात करूं, ये कौन कौन से कोर्सेज में रजिस्टर्ड है? 201, 202, 203, सारी इंफॉर्मेशन आ गई। दिस इज हाउ यू वर्क विद जॉइंट्स। फिर आपको मैपिंग के साथ, कोर्स के साथ इसको करना पड़ेगा ज्वाइन, तीनों टेबल ज्वाइन हो। ओके, क्वेश्चन इज, इसका एक सबसेट बना देते हैं। क्वेश्चन इज display the student details along with the course details in which they are enrolled. मैम ये डॉट का क्या मीनिंग है जहाँ पे आपने लिखा ए डॉट स्टूडेंट आईडी? टेबल नेम डॉट कॉलम नेम। ये पावर बीआई में भी था जब हम वो करते थे वैल्यू लिंक, याद है? जब 2 टेबल्स को ज्वाइन करते थे लास्ट में एक वैल्यू लिंक का सिंबल आता था, उस पर जब क्लिक करते थे तो वहां पे ऑप्शन होती थी कि आपको प्रीफिक्स देने हैं या नहीं। तो दिस इज लाइक टेबल नेम डॉट कॉलम नेम। आप ये स्पेसिफाई कर रहे हो कि ये स्टूडेंट आईडी कहां से आ रहा है। अगर आपने ए डॉट नहीं लिखा या टेबल नेम डॉट नहीं लिखा, सिस्टम विल से दैट इट इज एम्बिगुअस। उसको समझ में नहीं आएगा कि ये स्टूडेंट आईडी जो है स्टूडेंट टेबल से आ रहा है या मैपिंग टेबल से आ रहा है।
आपको A dot B dot करने के लिए पहले उनकी tables को rename तो करना पड़ेगा। ये करिए, एलियस दिया ना हम लोगों ने, मतलब अगर ये नहीं करा नहीं करोगे तो फिर आपको पूरा टेबल नेम लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको स्टूडेंट डिटेल्स भी देनी है, आपको कोर्स डिटेल्स भी देनी है, यानी कि कोर्स आईडी के साथ कोर्स नेम भी देना है। ठीक है, तो यानी कि 3 टेबल्स ज्वाइन होंगे। ये जो आपने टेबल्स अभी देखे हैं, इसमें हम लोगों ने अभी देखा है कि थर्ड टेबल जो है वो आप फर्स्ट टेबल के साथ ज्वाइन नहीं कर सकते हो डायरेक्टली। ओके, बट आपका क्वेश्चन ये है कि यहां से तो कोर्स आईडी निकल जाएंगी सेकंड और थर्ड टेबल से, आपको 201 का नेम भी बताना है जो कि है एक्सेल, वो तो ये टेबल यूज करके आएगा ना, तो ये तीनों टेबल ज्वाइन होंगे। ओके, तो हाउ विल यू डू दिस इज सेलेक्ट everything from first table is TBL student as A, inner join किसके साथ कर रहे थे, TBL mapping as B on A dot student ID is equal to B dot student ID। इसमें किसी को डाउट है? अब तीसरा टेबल ज्वाइन करना है तो दोबारा क्या लिखोगे, टाइप ऑफ ज्वाइन TBL course as C on B dot course ID is equal to C dot course ID। अब ये चीज समझो यहाँ पे हुआ क्या है, स्टूडेंट टेबल एंड मैपिंग टेबल वर गेटिंग ज्वाइंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट आईडी, यानी कि इन दोनों को यूज करके हम लोगों ने जब टेबल ज्वाइन करा तो यहाँ पे एक नया कॉलम ऐड हो गया था कोर्स आईडी का, करेक्ट। अब वो जो आउटपुट बना है ऊपर, उस आउटपुट को आप किसके साथ मर्ज कर रहे हो, मैपिंग के साथ। अब कॉमन कॉलम कौन सा है, कोर्स आईडी यहाँ पे है, कोर्स आईडी यहाँ पे है, तो सी टेबल से आपने कोर्स आईडी को उठा लिया जो कोर्स टेबल का था, और मैपिंग टेबल का क्या नाम दिया था, बी, और बी से आपने क्या पिक करा है, कोर्स आईडी। ठीक है, अब अगर इसको एग्जीक्यूट करें, स्पेलिंग्स रॉन्ग, एक सेकंड, तीनों टेबल ज्वाइन हो गए। ओके, दिस इज स्टूडेंट टेबल टिल हियर, ये कौन है, मैपिंग टेबल, ये कौन है, कोर्स टेबल। अब कॉलम्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, स्टूडेंट आईडी 2 बार आ रहा है, कोर्स आईडी 2 बार आ रहा है, अब इनको एक एक बार लेके आना है, तो यानी कि सब सेटिंग करोगे, ए डॉट एस्ट्रिक तो ठीक है, स्टूडेंट टेबल से सारा डेटा, बी से क्या निकालोगे, कोर्स आईडी, सी से क्या निकालोगे, नेम, और सिंस ये कीवर्ड दे रहा है तो बेटर इसको ब्रैकेट में लिख दो। ठीक है, हाँ ऐसा भी तो सकते हैं कि आप C से कोर्स आईडी और नेम दोनों ले लें, कर सकते हो, कर सकते हो, तो उसमें भी नहीं आएगा, सिर्फ A dot aspect डन। So this is a second method. If you don't want to display only the course ID, आपको course name भी print कराना है। Any doubts in the first question? Online guys, any doubt? Shall we start with the second question then? मैम अगर ये कोर्स आईडी और नेम को हमें डेट ऑफ बर्थ के जैसे बगल में लगाना है तो ऐसा कर सकते हैं, किसको? जो कोर्स आईडीज और नेम है, अगर हम हाँ। इनको डीयूबी या फोन नेम के बगल में लगाना चाहिए, आपको फिर कंकैटिनेट करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा कंकैट कोर्स आईडी कॉमन कॉमा नेम, वो आगे क्वेश्चन आएगा उसका। ठीक है। Any other doubt? Okay, question number 2 then, क्या करना है question 2 में? कौन से टेबल्स को यूज करोगे? एक तो स्टूडेंट टेबल यूज होगा, उसके अलावा मैपिंग टेबल, कोर्स नहीं होगा, कोर्स में कॉमन डेटा नहीं है स्टूडेंट के साथ। ठीक है, प्रायोरिटी किसको मिल रही है, तो कौन सा ज्वाइन लगेगा, लेफ्ट ज्वाइन, मतलब कि कहाँ पे स्टूडेंट को यूज करे, अगर स्टूडेंट पहले यूज हो रहा है तो लेफ्ट ज्वाइन, स्टूडेंट बाद में यूज हो रहा है तो राइट ज्वाइन। ठीक है, सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम TBL स्टूडेंट एज A, लेफ्ट ज्वाइन TBL mapping as B on A dot student ID is equal to B dot student ID।
अभी सिर्फ ज्वाइन करा है, इसके अलावा हम लोगों ने अभी कुछ नहीं लगाया। ओके, सिंस यू आर वर्किंग विद लेफ्ट ज्वाइन, तो हम लोगों ने पढ़ा था ना कि नल राइट साइड में आएगा, वही हुआ है। तो ऐसे हमारे पास 2 बच्चे हैं जिन्होंने किसी भी कोर्स में इनरोल नहीं किया अब तक, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर मैं बोलूं कि 101 है, ये कितने कोर्सेज में इनरोल है, 3, तो आपको काउंट बताना है। तो सबसे पहले तो ये डिसाइड करो कि फाइनल आउटपुट में कॉलम्स क्या क्या बनेंगे। बताओ, स्टूडेंट आईडी और ये क्या कह रहा है, उसने आपको स्टूडेंट आईडी तो नहीं डिस्प्ले करने के लिए बोला, उसने बोला डिटेल्स, तो यानी कि सारा डेटा फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, ही इज आस्किंग फॉर द स्टूडेंट डिटेल्स, ना कि स्टूडेंट आईडी, ठीक है। उसके बाद काउंट लगेगा, किसके ऊपर लगाओगे, एज काउंट ऑफ कोर्सेस। अब क्या करने की जरूरत है, ये चल जाएगा कोड, ग्रुप बाय। अब ग्रुप बाय में कौन आएगा, ग्रुप बाय, क्या आप ए डॉट एस्टिक लिख सकते हो, नो, आपको इंडिविजुअली कॉलम नेम लिखने पड़ेंगे, हाँ सारे, ठीक है। तो इट विल बी ए डॉट स्टूडेंट आईडी। अब मैं यहाँ पे ए डॉट स्टूडेंट आईडी क्यों लिख रही हूँ, व्हाई आई एम नॉट राइटिंग ओनली स्टूडेंट आईडी, एम्बिग्यूटी, स्टूडेंट आईडी 2 टेबल्स में प्रेजेंट है, अगर आपने सिर्फ स्टूडेंट आईडी लिखा, सिस्टम को नहीं पता चलेगा कि कौन से टेबल से आ रहा है, ओके। इसके बाद नेम, डीओबी, फोन नंबर ऑफ द कस्टमर, ईमेल ऑफ द कस्टमर। कहाँ पे है, अच्छा ओके, look at this, 101 is enrolled in 3 courses, 102 is in 2, Bobby and Michaela ने किसी में भी नहीं करा था, and the last person is registered in 6 courses, यही करना था। Have a look at the question and let me know if there is any doubt. पहले एम्बिग्यूटी का एरर आया था बिकॉज दिस वाज द कोड, जब मैंने इसको एग्जीक्यूट करा, लुक एट द एरर, एम्बिग्यूटी क्यों आई, क्योंकि काउंट किसके ऊपर लगा रहे हो वो मेंशन नहीं करा, तो यहाँ पे ओके। एनी डाउट गाइस इन क्वेश्चन नंबर 2, ऑनलाइन गाइस, एनी डाउट, अभी टेबल्स नहीं बनाया ना, तो वो सिस्टम ने मैपिंग नहीं करी अभी, तो वो एप्रीहेंड नहीं कर पा रहा, सेव करने के बाद हो जाएगा। कौन सा, पांच ही स्टूडेंट्स हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, क्या करना है इसमें, अब कौन कौन से टेबल्स यूज होंगे, सेकंड और थर्ड, ठीक है। कौन सा ज्वाइन लगेगा, कौन सा ज्वाइन लगेगा, इनर ज्वाइन लगेगा, लेफ्ट या राइट लगा सकते हो, ठीक है। तो वी से सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम स्टूडेंट टेबल as X, let's say, okay. Left join, TBL mapping table as Y on X dot student ID is equals to Y dot student ID. आपको किनका रिकॉर्ड डिस्प्ले कराना है, जिन्होंने ज्वाइन नहीं करा है, ओके। तो कैसे करोगे फिल्टर, अब काउंट की जरूरत नहीं है, यहाँ आप ये कर सकते हो, ये जो ऊपर बनाया था
सेम क्वेरी लिख दो और नीचे वेयर सॉरी हैविंग लगा दो कि काउंट इज इक्वल्स टू 0। एक तो वो कर सकते हो। दूसरा काम क्या कर सकते हो, वेयर कोर्स आईडी इज नल। तो उसको कोर्स आईडी वो करना पड़ेगा, जिसका कर दिया एक्स में y। नहीं, कोर्स आईडी आपकी सिर्फ उसमें है वाई में। तो वो जिसमें होती है सेम सब। अगर तो ये कॉलम इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली सिर्फ एक टेबल में है, फिर तो टेबल नेम देने की जरूरत नहीं है, बट जैसे स्टूडेंट आईडी दोनों में था, फिर आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, आ गया। अब क्या मेरे को ये नल नल डिस्प्ले करवाने की जरूरत है? मुझे डिस्प्ले क्या कराना है, स्टूडेंट डिटेल्स। तो एस्ट्रिक की जगह क्या लिखोगे, सिर्फ स्टूडेंट डिटेल्स ही तो करानी है। ठीक है, ये हैं 2 स्टूडेंट जो इनरोल नहीं हुए। क्लियर। अब एक मेथड दूसरा ये था कि आप सेम क्वेरी लिखो जो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखी थी, और ये हमें वही आउटपुट देगा जो क्वेश्चन नंबर 2 का था, काउंट वाला। इसमें अब आप फिल्टर लगा सकते हो, वेयर और हैविंग। हैविंग क्या लिखोगे, हैविंग के अंदर काउंट ऑफ बी डॉट स्टूडेंट आईडी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी, ये भी मेरे को 2 रिकॉर्ड्स देगा। ठीक है, बट काउंट प्रिंट करवाना है नहीं करवाना है वो आपकी चॉइस, बट आउटपुट दोनों में सेम आएगा। यही थी फर्स्ट क्वेश्चन की। समझ नहीं आई? आपने 2 टेबल ज्वाइन करे हैं सिंपली लेफ्ट ज्वाइन लगा के। सॉरी, एक्स हटा दो यहाँ पे और 4 लगाओ। ये है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिन्होंने एनरोल नहीं किया तो आपको नल चेक करना है। नल की कंडीशन हम लोगों ने किस पे लगा दी है, कोर्स आईडी के ऊपर, तो फिल्टर लग गया वेयर कोर्स आईडी इज नल। ठीक है, दूसरी बात, ये नल नल की कॉलम्स प्रिंट कराने की जरूरत है नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ब्लैंक है। तो हम लोगों ने क्या बोला कि सिर्फ स्टूडेंट्स की डिटेल डिस्प्ले करा दो, रादर देन क्या वाई की भी करवाओ। एनी डाउट्स इन क्वेश्चन नंबर 3? ऑनलाइन गाइस, एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर 4, अब क्या करना है इसमें, you want to list all the courses and the number of students enrolled in each course। अब मेरे को ये बताओ कि जो फाइनल आउटपुट बनेगा वो कैसा दिखेगा। पहले कॉलम में क्या आएगा, कोर्स आईडी या कोर्स नेम। दूसरे कॉलम में क्या आएगा, काउंट ऑफ स्टूडेंट्स। एक्सेल में कितने बच्चे हैं। ठीक है, तो कौन कौन से टेबल ज्वाइन होंगे, दीज वर द 3 टेबल्स। किस किस को ज्वाइन करोगे आउटपुट लेके आने के लिए, फर्स्ट और सेकंड से हो जाएगा, थर्ड की तो जरूरत ही नहीं है। आई डोंट वांट टू डिस्प्ले द स्टूडेंट डिटेल। ठीक है, सो सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम TDL course as C। Which type of join? ऐसा भी तो हो सकता है कि एक कोर्स में कोई भी बच्चा ना हो, इनर ज्वाइन करोगे तो वो डेटा ही नहीं आएगा। लेफ्ट कर सकते हो, फुल आउटर भी कर सकते हो, पर फिर उसके लिए आपको नीचे फिल्टर लगाना पड़ेगा। आपको कॉमन डेटा नहीं देखना ना, फुल आउटर तो कॉमन डेटा भी देगा आपको। ठीक है, ऑल्सो ये क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज दिस, ऑल कोर्सेज। तो प्रायोरिटी किस टेबल को मिलेगी, कोर्स टेबल को। ठीक है, तो आप लेफ्ट ज्वाइन कर सकते हो। किसके साथ लेफ्ट ज्वाइन करना है, मैपिंग एज एम, लेट्स से ऑन सी डॉट, किसके बेसिस पे ज्वाइन होगा, कोर्स आईडी, कॉमन कॉलम इज कोर्स आईडी, इक्वल्स टू एम डॉट कोर्स आईडी। ठीक है, अभी सिर्फ ज्वाइन करते हैं दोनों को, टेबल ज्वाइन हो गए। अब इसके बाद क्या करना है, आपके पास कोर्स आईडी भी आ गया, कोर्स नेम भी आ गया, ये 2 कॉलम्स रख लेते हैं, नेम भी और आईडी भी। तीसरा कॉलम क्या बनेगा, तो यानी कि आई कैन से सी डॉट एवरीथिंग।
कोर्स टेबल से सारा कुछ, मैपिंग टेबल से क्या आएगा? कुछ भी नहीं, काउंट लगाना है ना, किसके ऊपर लगाओगे? एम डॉट की जरूरत नहीं क्योंकि स्टूडेंट आईडी एक बार ही रिपीट हो रहा है, एज स्टूडेंट काउंट। इसके अलावा और क्या करने की जरूरत है? ग्रुप बाय। ओके, ग्रुप बाय में कौन जाएगा? सी डॉट एवरीथिंग। अब सी डॉट एवरीथिंग डायरेक्टली तो लिखोगे नहीं, तो यानी कि आपको सी के कॉलम नेम्स लिखने हैं, ठीक है? तो कोर्स आईडी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो आपको मेंशन करना है कि कोर्स आईडी आप किस टेबल से लेके आ रहे हो, कॉमा नेम, दैट्स इट। डन। कोर्स आईडी, कोर्स नेम, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो वी हैव जावा एंड वी हैव SAS, .NET, PHP जिसमें एक भी स्टूडेंट रजिस्टर नहीं हुआ है। Any doubts in the first 4 questions? Any doubts, guys? So I'll stop the class here. Okay. And in the next class, we will be starting with this MSO data.